Hello everyone. So our topic for today is chapter number 6, beginning of freedom movement, on page number 25. So now, as the name suggests, beginning of freedom movement. Okay, so when did Indian people realize कि अभी हमें freedom movement करना है, that now we have to work for our freedom. So how did they got to know, how did the idea clicked, is something which we are going to learn in this session. English education made mixed effects on Indian society. The seeds of nationalism were sown by the reforms of newly educated society. Due to various movements in different parts of India, a favorable situation was created to build a political organization of an all-Indian level which will bring together the various provisional political organizations. What do you mean by provisional, students? Provisional is state political organization. Now अभी हमारे महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना है, वैसे जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उसको प्रोविजनल बोलते हैं. Different groups of politically aware people, and to express the aspiration of the nation by diverting the public attention towards the question of the nation. Okay, so Indian education was being established, right? हम लोग ने देखा पहले के चैप्टर में कि न्यूली जो एजुकेशन था that was established, so that made a mixed effects on people. Now what happened was all of the people were struggling, right? At the end of, at the bottom of their heart, that they knew that we are under control of someone. So what they decided कि हम एक ऐसी political party organize करेंगे through which everyone can come together and express their views and opinions, कि जिनके जिनके जो views है, जो opinions है, वो हमसे share कर सके, वो अपना point रख सके. And that is why they thought that we should create a political party. Okay, what was the main intention? That everyone should come together, express their views, opinion, and people should be aware of what are the things that are going on in the country, and then they should think for the nation. Okay, कि हमारे country के लिए हमें सोचना है वैसा. Centralization of administration during British rule. Due to the British administration, its implementation on India brought the nation under one roof in its true sense, right? जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स ने हम लोग को कैप्चर कर लिया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हम के ऊपर था, बराबर. दे रूल्ड ओवर अस. सो when they were ruling over us, indirectly all of the people of our country were coming together, right? सब लोग एक साथ आ रहे थे. क्यों? Because Britishers हमको रूल कर रहे थे, right? So indirectly everyone was coming together. Due to identical reforms all over the country and equality before law, the feeling of nationalism developed among the people. For the convenience of administration and swift movement of the army, the British built network of roads and railways. But these facilities benefited the Indians as well. Okay, तो Britishers ने क्या किया था? उन लोग ने what did they do? For their welfare, okay, for their what do you call, कि उनके अच्छे के लिए what they did was they built roads and railways so that they can travel and have contacts with each other and rule the country properly. But उस हिसाब से क्या हो गया, एक अच्छा advantage हम Indians को भी मिल गया. Why? Because we Indians were also able to travel because of the development of roads and railways. So that is how we all can come together. पहले क्या decide किया था कि सब एक साथ आएंगे, बट कैसे आना है? देयर वर नो मीन्स ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. सो व्हेन ब्रिटिशर्स व्हेन दे मेड रोड एंड रेलवेज, इट वाज बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो. हम इंडियंस के लिए भी वो बेनिफिशियल था. People from different parts of India came in contact of each other. There were increase in communication and the feeling of nationalism grew up. That now people were coming together, right? So communication हो रहा था. पहले there were no means of phones and something, right, that they can communicate. So people were able to come together because of this development of roads and railways, and that is how people now understood the feeling of nationalism. They now realize कि हम लोग एक साथ तो आ रहे हैं, but why are we coming together? To get ruled by Britishers? No. So now we need to work for our country. समझा? Next, economic exploitation. The Indian wealth was following
the Indian wealth was flowing towards England by all means. Due to imperialist policy of England, there was beginning of economic exploitation of India. तो अभी क्या हो रहा था, that all of this was Indian wealth, right? हमारा पैसा था that was going to the Britishers, okay? Due to the imperialist policy. Now what do you mean by imperialist, student? Imperialist is when a कंट्री हु इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो एक वीक कंट्री को या पुअर कंट्री को रूल कर रही है. तो आर कंट्री वॉजंट पुअर बट कंपेरेटिवली जो इतना पैसा था ब्रिटिशर्स के पास, हमारा ही पैसा था, उस हिसाब से हम लोग थोड़ा लो कंट्री थे एंड दे वर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. सो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इज़ रूलिंग अ वीक कंट्री देन दैट इज़ कॉल्ड एज imperialist policy. Okay, so this policy of England was completely exploiting इंडियंस के. हमारा इंडियंस, हम जो इंडियंस थे वो पूरी तरह से हम लोग इसमें फंस चुके थे, हम लोग लिटरली बर्बाद हो गए थे वैसा. फार्मर्स वे compelled to take cash crops, burden of land taxes, continuous famines, all this broke down the backbone of Indian agriculture. अब क्या हो रहा था, फार्मर्स वे forced to compelled to take cash crops. Now what do you mean by cash crops? Cash crops मतलब एक तो फार्मर खुद से वो क्रॉप उगा रहे हैं बट दे वर नॉट एबल टू यूज़ इट फॉर देमसेल्व्स, वो खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे. कैश क्रॉप्स मतलब क्या, आपका क्रॉप है बट आपको वो किसी को सेल करना है वैसा. Okay, so that is mean by cash crops, that you cannot use that crop on with for yourself वैसा. And then burden of land taxes, कि ये लोग लैंड, ब्रिटिशर्स एक तो उनका लैंड खुद ले लेते थे एंड फिर फार्मर्स पे टैक्सेस लगाते. तो दैट बर्डन, कंटिन्यूस famines. Now what do you mean by famines, students? Famines is जब भी there is completely क्या बोलते हैं, भूखमरी बोलते हैं ना, that people are not getting food and that is why इतना to some extent, like people are not getting food to that extent that people die. Okay, that is called as famine. Okay, so continuous famine हो रहा था because क्रॉप फार्मर उगा रहा है, खुद का क्रॉप्स उगा रहा है फार्मर्स, बट वो उसको मिल ही नहीं रहा है, उसको वो क्रॉप बेचना पड़ रहा है. इसके लिए उसके वजह से उसको खुद को खाने को कुछ मिल नहीं रहा था. एंड दैट इज़ वाई कंटिन्यूस फैमिन्स वर देते. ऑल ऑफ दिस सिचुएशन लिटरली ब्रोक डाउन इंडियन एग्रीकल्चर की, जो हमारा बैकबोन है एग्रीकल्चर इंडिया का, वो कम्प्लीटली टूट चुका था. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, दैट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने भी डिक्लाइनेशन दे दिया था. एंड दैट इज़ वाई अगर ट्रेडिशनल ये चल रहा है इंडस्ट्रीज़, तो पीपल वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बट पीपल को जॉब भी नहीं मिल रही है. तो दैट वाज अगेन लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर क्लास. वेरियस न्यू टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द मिडिल क्लास. दिस लेड टू द ग्रो ऑफ डिसकंटेंट अमॉन्ग द पीपल. के कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स एक कोई चांस नहीं छोड़ता था कि कॉमन पीपल को कैसे हैरिस करना है. दे वर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द मिडिल क्लास पीपल. न्यू टैक्सेस, हमेशा कोई ना कोई टैक्स लगाता ही रहता था. सो दैट द मिडिल क्लास पीपल वॉज कम्प्लीटली इन पेन, completely destroyed, and that is why it grew discontent. Okay, जो ब्रिटिशर्स के लिए उनके मन में डिसकंटेंट मतलब कंटेंट इज़ हैप्पीनेस, तो डिसकंटेंट मतलब अनहैप्पीनेस या गुस्सा था ब्रिटिशर्स के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन. ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू आइडियाज़ सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वे इंट्रोड्यूस टू इंडियंस. अब ब्रिटिशर्स का रूल था तो ये लोग अपने पॉलिसीज़ या अपनी पैटर्न्स लेके आए थे फॉर इंडियंस. सो विच ऑल आइडियाज़ वर बीन आइडेंटिफाइड और इंट्रोड्यूस टू इंडियंस. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी. जस्टिस मतलब क्या स्टूडेंट्स, लॉज के जो लॉज है वो सबके लिए सेम होना चाहिए. लिबर्टी इज़ फ्रीडम, कि सबको फ्रीडम मिलना चाहिए. इक्वालिटी इज़ अगेन एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल. एंड डेमोक्रेसी जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो. सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू इंडियंस. हम लोग को इंट्रोड्यूस की थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी? बाय ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ दीज टर्म्स टू इंडियंस. रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, nationalism, these principles were accepted by Indians. Okay, now what do you mean by rationalism, student?
रैशनलिज्म इज़ व्हेन पीपल जो अपने नॉलेज से उनका थॉट प्रोसेस है, दे शुड एक्सेप्ट दैट, नॉट द वन विच पीपल बिलीव कि नहीं हमारे कल्चर में है तो हमें इसको फॉलो करना है. नो, रैशनलिज्म इज़ टू बी रैशनल, दैट यू शुड हैव अ थॉट प्रोसेस बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, कि आपके जो नॉलेज से आप एक थॉट प्रोसेस बनाते हो ना वो, एंड ना कि जो पहले से ही अपने ट्रेडिशन में है या कल्चर में है वैसा. सो रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, कि आपका एक एटीट्यूड साइंटिफिक एक रीज़न वाला होना चाहिए वैसा. ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, और ये ऑल ऑफ दिस प्रिंसिपल वे बीन इंट्रोड्यूस टू अस बाय ब्रिटिशर्स. Therefore, there inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following this principle. India is a country of diverse language, but with the introduction of English language, India got a new medium of communication. अब ये सारी आइडियाज़ हमारे सामने इंट्रोड्यूस की थी, राइट. डेमोक्रेसी, रैशनलिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमैनिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर बीन इंट्रोड्यूस टू इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स. तो तभी इंडियंस को क्लिक हुआ कि ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़, ऑल ऑफ दीज आइडियाज़ अगर हम इंडियंस एक साथ आके अपनाए, if we all come together and we take these ideas and work according to ideas, then we could actually remove Britishers from our country. तो उस टाइम पे उनको पता चला कि if we guys come together and if we follow all these principles, then definitely we are going to get success. We will get success to remove all of these Britishers out from our country. And at that time we had many languages, right? We are a diverse country. हमारे country में बहुत सारे languages है, but at the same time English was also introduced, and thus it was a new medium for communication. Study of ancient Indian history. The Asiatic Society was established at Bengal by the British. Many Indians and Western scholars started study of Indian culture. The manuscripts in Sanskrit, Persian and other languages were examined and research was published. Okay, so the Asiatic Society was established in Bengal by the Britishers. तो Britishers ने बंगाल में ये establish की थी. इसके ऊपर क्या था, many Indian scholars were studying upon our Indian culture, के जो हमारा Indian culture है उनके ऊपर they were doing research, and thus they made manuscripts. Manuscripts क्या होती है स्टूडेंट, जिसमें writings लिखे होते हैं, that is called manuscripts. So manuscripts about our Indian culture were being published in different languages. Okay, Dr. Bhaudaji Lad, Dr. R.G. Bandarkar, these Indian scholars made intensive study of ancient Indian culture. After understanding that we are blessed with glorious ancient tradition, the Indians were awakened with a sense of identity. The Bandarkar Oriental Research Institute is working since last 100 years in Pune. Okay, so Dr. Bhaudaji Lad and Dr. R.G. Bandarkar, you can see their photos have been given. These guys made an intensive study on Indian culture. के इन्होंने literally like पूरा Indian culture के ऊपर study किया था. एंड देन पीपल नाउ गॉट टू नो कि हमारी तो आइडेंटिटी पहले से ही है. ब्रिटिशर्स हैज़ नॉट गिवन अस एन आइडेंटिटी. वी व्हेन द पीपल स्टार्टेड रीडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स एट दैट टाइम दे गॉट टू नो दैट वी ऑलरेडी हैव एन आइडेंटिटी. हमारे इंडियन कल्चर से इंडियंस को ऑलरेडी आइडेंटिटी मिली है वैसे. एंड देर इज़ दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जिनका फ़ोटो है डॉक्टर R.G. भंडारकर उनके नाम से है. इट इज़ सिंस लास्ट 100 years in Pune, so it's still there in Pune and वहाँ पे research होता है वैसा. Now contribution of newspaper. During this period, English and vernacular newspaper and periodicals came to be published. Through this newspaper, political and social awakening took place. Newspapers like Darpan, Prabhakar, Hindu,
Amrit Bazar, Patrika, Kesari, Maharashtra started criticizing the government. So now, at that time, we did research on Indian culture, right? So at the same time, we decided to publish contribution of newspapers. So we had different newspapers. See, the names of newspaper are given. Newspapers like Darpan, Prabhakar. अभी कैसे हमारे में we have what do you say? We have DNA, Lokmat, and all such, right? तो वैसे ही न्यूज़पेपर उस टाइम पे कैसे होते थे, दर्पण होते थे, प्रभाकर होते थे, केसरी, महाराठा. यू माइट हैव लिसन टू दिस वर्ड्स राइट अर्लियर. सो ऑल ऑफ दीज वर बीन क्रिएटेड न्यूज़पेपर. एंड इसमें क्या होता था, जो इंडियंस थे हम लोग, वी यूज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. हम लोग क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को कि कैसे वो लोग हमारे ऊपर दे आर नॉट व्हाट डू यू से, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस इन अ प्रॉपर way. Establishment of Indian National Congress, as we saw earlier. Okay, what was the main motto? That all of the people should come together and share their ideas. And एक political party create होनी चाहिए, right? Political party create होनी चाहिए. तो उस टाइम पे ये हुआ था, Indian National Congress built up हुआ था. It was a, जैसे as I said, a political party should be created. On 28 December 1885, the first session of Indian National Congress was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai. Okay, so the first Indian National Congress was held. Okay, the first session was held where? In Mumbai, which was in Gokuldas Tejpal Sanskrit School. Okay, 72 delegates from different provinces of India participated in this session. So there were 72 people. Delegates are like high scholar people from different parts of India who came over here and took part in this session. Vyomesh Chandra Banerjee, a renowned lawyer from Kolkata, was the president of this session. Okay, so he was the president of the session. You can see the picture. In this session, they established the Indian National Congress. Alan Octavine Hume, a British officer, took lead in the establishment of Indian National Congress. तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी कौन थे स्टूडेंट्स? वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. एंड ये जो थे एलन ऑक्टावाइन हुम, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे. वो क्या अपने इंडियन थे. तो ये ब्रिटिश ऑफिसर, ही टुक द लीड. वाई? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंक्रीज proportion of Indians in the administration, reduction of military expenses by the British government. Such statements were sent to British. Okay, तो हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टी हेल्ड कर दी थी, राइट? तो हमें हमारा ओपिनियंस शेयर करना था. तो क्या क्या ओपिनियन शेयर हुआ था कि इंक्रीज प्रपोर्शंस ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, के जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या होना चाहिए? देयर शुड बी मोर ऑफ इंडियंस एंड लेस ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, एंड द मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, that should be reduced. These two were the objectives which were being given to Indian National Congress by Indian people. Okay, कि Indian people के साइड से ये सारी चीज़ों का ओपिनियन दिया गया था. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्ड तो हो गई थी, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो कौन सी सारी चीज़ों पे दे वर गोइंग टू वर्क. लेट अस सी. टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, geographical territories and bring them on a common platform to understand each other's problems and views, to increase the felt feeling of oneness among the people, to take efforts for the development of country were the objectives of Indian National Congress. Okay, कि objective क्या था कि हमें we should all forget, we should not keep on crying about our religion, caste, creed. Okay, we should forget all of these things and remember our problems, कि जो हम लोग problems face कर रहे, the problem which we are facing from government. We should come together, we should have our unity and we should work for the welfare of the country. We should take steps which could help for the development of country. वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना था. Okay, this was the objective, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें एक दूसरे को वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर व्यूज़ एंड वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट और नॉट मेक डिफरेंसेस इन रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री.
Now let us see the moderate phase. Okay, so 1885 से 1905 ये जो पीरियड था इसको क्या बोलते थे, मॉडरेट फेज. लेट अस सी व्हाई. The early 10 years after establishment of Indian National Congress, their contribution was very slow but consistent. हम लोग ने ऊपर देखा स्टूडेंट establishment में, it was built on 1885. देखो on 28 December 1885 ये built हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट जो फर्स्ट 10 years थे ना वो बहुत स्लो थे. ओके, द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी स्लो बट कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब क्या, कंटिन्यूसली, कि वो लोग कुछ ना कुछ हेल्प करते थे बट बहुत स्लो चल रहा था वैसा. द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वे रियलिस्टिक एंड हाईली एजुकेटेड. ओके, रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल, एंड हाईली एजुकेटेड मतलब आप लोग को पता है, दे वे aware that through organized work a strong foundation need to be built up. Western thinkers' philosophy of liberalism, freedom, equality, fraternity, these values had an impact on them. They believe in constitutional methods. Okay, so now the founder, they were the one who were the people who were into Indian National Congress, वो लोग क्या थे, highly educated and realistic थे. So they knew that we need to think practically, where freedom, equality, all these ideas should make an impact on people, कि people पे इनका impact होना चाहिए. And thus they believed कि ये सारे methods हमें use करने चाहिए. They had a hope that if we demand through constitutional methods, then the British will give justice to our demands. Gopal Krishna Ji Gokhale, Firoz Shah Mehta, Surendranath Banerjee will all moderate leaders. So now they knew कि अगर हम लोग constitutional methods से जाएंगे. Now what happens student, देखो एक ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ पे खुद से लोगों को इकट्ठा कर रही हूँ, if I am forming a group by myself and then making what do you say, making nara against the Britishers, that won't work. But if the Indian National Congress party जो बनाई गई थी लोगों के लिए by Britishers, if they are putting a point in front of government, so that would work. So they thought that if we constitutional way से हम लोग जाते, अगर हम कोई point government के सामने रखते, Britishers के सामने रखते, तो they will definitely note that point वैसा. So Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta, Surendranath Banerjee were all the moderate leaders. Now these all were the moderate leaders. वो उस time के moderate leaders थे. In the session of Indian National Congress, different resolutions were put forward by them, such as to get representation in provisional legislation, jobs for educated Indians, cutting down the increasing expenses on military, legislature and judiciary should be separated for the safeguarding legal rights in India, etc. Okay, to cause a split in the national. Okay, पहले इतना देख लेते हैं. सो इन दिस सेशन अभी दे डिसाइडेड कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाते, तो विच ऑल वर द पॉइंट्स जो इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे. सो द फर्स्ट वन वाज प्रोविजनल लेजिस्लेशन. व्हाट डू मीन बाय लेजिस्लेशन स्टूडेंट? लेजिस्लेटर इज ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, दे वोट फॉर न्यू लॉज, कि कौन से न्यू लॉज इस्टेब्लिश करने हैं. सो दीज आर द पीपल हु आर इनटू लेजिस्लेशन. तो व्हाट डिड दे से दैट प्रोविजनल लेजिस्लेटर के ये क्या होता था, पहले खुद ब्रिटिशर्स दे ओनली यूज टू मेक न्यू लॉज. सो व्हाट दे सेड दैट एवरी स्टेट, प्रोविजनल इज आई सेड स्टेट, सो एवरी स्टेट शुड हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेटर, के एवरी स्टेट का अपना अपना ग्रुप होना चाहिए. एंड दे शुड बी they should have freedom to vote for new laws. Okay, increase for jobs for educated Indians, के जो Indians है, जो educated है, they should be also they should also get jobs. Not only Britishers but our Indians should also get jobs. Cutting down the increasing expenses on military, जैसे पहले डिस्कस किया कि जो military पे expenses है that should cut down. Legislator and judiciary. Now what do you mean by legislator and judiciary? Should be separated for safeguarding legal rights of Indian. Now judiciary is a branch of government स्टूडेंट जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो लोग कोई भी लॉ अप्लाई कर सकते हैं. एंड लेजिस्लेटर क्या होता है, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट वर्क्स फॉर न्यू लॉज. सो व्हाट दे सेड दैट दे should work for Indians. Okay, they should make laws which are
which is for the welfare of Indians. To cause a split, अभी ये सारे पॉइंट्स इंडियंस ने गवर्नमेंट के सामने रखे थे. तो नाउ द गवर्नमेंट न्यू कि अब इंडिया स्ट्रांग हो गया, कि इंडिया के लोग स्ट्रांग हो गए, दे हैव यूनिटी अमॉन्ग देम. तो ये यूनिटी को हमें कैसे भी तोड़ना है, वॉज द idea of Britishers. So what did they do? To cause a split in the national movement, the British implement the policy of divide and rule. So now they thought, now since they all have come together, now I should divide them and फिर उनके ऊपर rule करना चाहिए. So this was moderate period, which was from 1885 to 1905. Now let us see extremist phase. Okay, now what is extremist? Extremist, as the name suggests, extreme मतलब जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रीमिस्ट फेज. ऑल इंडियन लीडर्स हु वर पॉलिटिकली अवेयर kept aside their differences of caste, religion, language, province and gathered on a single platform of Indian National Congress. Why? It was the main reason why Indian National Congress was created, so that everyone should keep aside their mentality, जो कास्ट है, क्रीड है, जेंडर पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब छोड़ के everyone had formed Indian National Congress to keep their views and opinions. वही the main reason of Indian National Congress. They were unanimous decision regarding the objective of the Congress and taking forward the movement by constitutional means, but there were differences regarding the working system. These were ideological difference. Okay, now there were unanimous decision. What do you mean by unanimous decision? Unanimous is everyone अग्रीइंग अबाउट समथिंग, कि जो एवरीवन जो भी लोग हैं वो एक चीज़ पे बिलीव कर रहे. अब इसमें क्या होता था, what did they say, there were differences regarding opinions. अभी जो सारे फॉर्म हुए थे लोग, उसमें भी कैसे होता है, अभी सबने अपना ओपिनियन दिया बराबर, पर देर कैन बी a change in opinion. If I agree to a particular point, it's not necessary ना that everyone agrees to that point. Some may differ to that point, and that is why differences आ गए. जो opinions थे उनमें differences आ गए, and this lead to a थोड़ा सा झगड़ा types between the people of Indian National Congress, because there was differences in the opinion. From these differences, two main political groups were formed. Okay, so ये differences के वजह से दो political groups form हुए थे, the moderates and the extremists. Now what is the moderate? The moderates are the one who advocated peacefully and constitutional manners, and the extremists were the one who believed in severe struggle for attainment of freedom. ओके, तो मॉडरेट्स क्या होते थे, जो पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, एकदम राइट वे में पीसफुली जिनको अपना व्यू पॉइंट आगे रखना था, दीज आर कॉल्ड एज मॉडरेट्स, द सिंपल वन. एंड द एक्सट्रीमिस्ट वंस आर द वन जो थोड़ा एक्सट्रीम वे में जाके दे यूज टू कीप देयर व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ पीपल. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal were believed to be the extremist leaders. So all of these were the extremist leaders. In the early period, the extremist leaders for bringing political awakening among the Indians used methods like newspaper, national festival and national education. देखो अभी ऊपर हम लोग ने देखा क्या लिखा है, and the extremists were the one who believed in severe struggle, कि जिन्होंने बिलीव किया था कि हमें एकदम सीवियरली स्ट्रगल करना पड़ेगा लोगों के पॉइंट साथ में रखने को, लोगों को साथ में लाने को. दीज वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट. मैंने पहले बोला जो एक्सट्रीम लेवल पे जाते थे, बट एक्सट्रीम लेवल कौन सा, एकदम स्ट्रगल में जाते थे, सो दैट पीपल शुड कम्स टुगेदर. तो ऑल ऑफ दीज जो हम लोग ने देखा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र चैटर्जी, दे थॉट के यू शुड पीपल में पॉलिटिकल अवेकनिंग लाना चाहिए, दैट पीपल शुड गेट अवेक के हमारे कंट्री में व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ दे कैन कम टुगेदर. एंड दे थॉट दैट वी वुड एस्टैब्लिश और वी वुड पब्लिश न्यूज़पेपर्स तो पहले से ही थे, तो उसमें हम लोग कुछ और आइडियाज़ डालेंगे जिसके थ्रू पीपल कैन रीड देम एंड अंडरस्टैंड देम. नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल एजुकेशन. फेस्टिवल्स लाना चाहिए सो दैट एवरीवन कम्स टुगेदर, एंड नेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम. केसरी एंड मराठा
were the newspaper through which Lokmanya Tilak made several severe criticism on the suppressive policy of Britishers. Okay, so all these two paper, Kesari and Maratha, इसमें लोकमान्य तिलक जी जो थे ना, he used to criticize the British government. Criticizes उनके बारे में सच्चाई लिखना है, उनके बारे में जो उनका बुरा नेचर है वो लिखना. ओके, इन बंगाल प्रोविंस अमृत बाजार पत्रिका वॉज अ माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी. ओके, एंड जो बंगाल में जो था उसमें अमृत बाजार पत्रिका, ये जो पत्रिका जो न्यूज़पेपर थी उसमें पूरा एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे बुराई लिखा था गवर्नमेंट के बारे में. बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंसेस पीपल शुड कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़. कॉमन पीपल शुड गेट inspiration from contribution of national personalities. With this objectives, Tilak stand organizing of Shiv Jayanti and Ganesh Utsav. For political reasons, if people come together, then government will ban them. But for religious reason, if people come together, the government will not ban them was his opinion. ओके, सो लोकमान्य तिलक जी का क्या ओपिनियन था कि हम लोग अगर ऐसे ही इफ़ एवरी वन कम टुगेदर ऐसे ही इंडियंस, सो गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली बैन देम, राइट. बट इफ़ वी आर कमिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस वर्क, रिलीजियस के नाम पे, रिलीजियस काम के नाम के ऊपर अगर हम लोग आ रहे हैं तो दे वोंट मेक एनी एक्शंस अगेंस्ट अस. एंड दैट इज़ वाई ही मेड फेस्टिवल्स, ही क्रिएटेड फेस्टिवल्स लाइक गणेश उत्सव एंड शिव जयंती, सो दैट पीपल कम टुगेदर. अपने अंदर के जो भी दे हैव द डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा, they should forget that discriminations and come together, express their view and opinion in a religious way. And that is why Lokmanya Tilak ji made these festivals. Okay, in the Mandalay prison, Tilak wrote Gita Rahasya. Its core was philosophy of Karma Yoga and stressed the people should always be in action. Okay, so जो लोकमान्य तिलक जी थे उन्होंने तो प्रिजन जेल में बैठ के गीता रहस्य करके एक बुक लिखी थी. उसमें व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ दैट बुक? कर्म योगा एंड stress the people. It always stressed people that they should come together and form, they should be a group against this Britishers. The extremist leaders established education institutes for creating a generation concerned about our language and tradition. The extremist leaders were of the opinion that if lakhs of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them, only then success will be achieved. Okay, so what they decided, they came together and they formed educational institution. Okay, जहाँ पे हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन सिखाए जाते थे. एंड उनका मानना क्या था, दैट इफ़ ऑल ऐसे 2-3-4 लोग आए ब्रिटिशर्स के सामने, दैट वोंट बी ऑफ एनी यूज़. ओके, सो इफ़ lakhs, if people in lakhs are coming together and are against Britishers, then only we can do something against the Britishers, and then we can have our own rule and we can remove Britishers out of India. They unanimously believed that the movement should be made more severe, but they did not adopt the means of armed revolution. Rather, instead, for an extensive public agitation, the moderators laid the foundation of freedom movement and the extremists carried forward the movement. तो जो moderators थे ना, वो लोग सिर्फ प्लान करते थे कि ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे, बट जो extremists थे, they used to execute that plan. Okay, and they decided कि सिर्फ if only people come together and just keep their opinions and views is not enough. We need to come together and fight for our country. Okay, in 1897 in Pune, the epidemic of plague had spread on a large scale. Hundreds of people died due to it. The officer named Rand was appointed. The plague patients were searched out and oppressive measures were adopted. As a revenge, the Chafika brother assassinated Rand. The government tried to connect relation of Lokmanya Tilak with this conspiracy. After being unsuccessful, the government imprisoned Tilak with revenge. अभी क्या हो गया, पुणे में है ना plague आ गया था ना. What do you mean by plague, student? It is basically a contagious bacterial disease, okay, which spreads quickly and kills many people. Okay, so plague 1897 में वहाँ पे पुणे में बहुत गंदी तरीके से स्प्रेड हो गया था. एंड द प्लेग पेशेंट्स वे सर्च आउट
and oppressive measures were adopted. Okay, so when they got to know people who had suffering, who were suffering from plague, they decided, and then government जो doctors थी उनको अच्छे से treat करती थी and all of them. But the government, what did they try? They tried कि हम कैसे भी करके लोकमान्य तिलक का इनके साथ कनेक्शन है ऐसा बताए, but they couldn't do that. They were unsuccessful. एंड देन द गवर्नमेंट इम्प्रिजन तिलक, तो उन्होंने जो तिलक थे, तिलक जी, उनको इम्प्रिजन कर दिया रिवेंज के साथ. नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी. The then victory Lord Curzon contributed to it. Bengal was a very large province. To carry out the work of this province was difficult from administrative point of view. By putting up this reason in 1905, he declared the partition of Bengal province. Okay, so इसमें क्या हो गया? With this partition, arrangement was made such that majority Muslims will remain in East Bengal and West Bengal for majority of Hindus. The hidden strategy of the British was, if the Hindu Muslims were divided due to partition, then the freedom movement will be weakened. अभी बंगाल में क्या था? They people were coming together, हिंदू मुस्लिम एक साथ आ रहे थे, and all of us were कास्ट, जैसे हम लोग ने पहले डिसाइड किया, राइट, कि सब अपना कास्ट, क्रीड, रिलीजन छोड़ के everyone was coming together and forming their own opinions. So Britishers knew that if all of Indians come together, तो हम तो फिर हम वीक हो जाएंगे. तो दे डिसाइडेड कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, बंगाल का पार्टीशन करेंगे. सो नाउ इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे बंगाल का पार्टीशन किया. ये बंगाल का पार्टीशन ऐसे किया कि जो ईस्ट बंगाल था उसमें मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे, एंड जो वेस्ट बंगाल था उसमें हिंदू थे. बट ऐसा तो रीज़न नहीं दे सकते, दे कैन नॉट गिव अस द रीज़न, ओके, कि वी आर पार्टीशन वी आर मेकिंग पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो उन्होंने क्या रीज़न दिया कि बंगाल इज़ वेरी लार्ज, ओके, एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग अ पार्टीशन ऑफ बंगाल. बट ऐसा कोई सच में रीज़न नहीं था. उनको सच में उनको सच में हिंदू और मुस्लिम को अलग करना था. इसके लिए उन्होंने ये पार्टीशन किया. ओके, what was the hidden strategy? They knew that if Hindu Muslims are being divided, then this movement, जो हमारा movement था freedom के लिए, वो weak हो सकता है, because वापस हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए तो थोड़ा कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट बन जाता है वैसा. तो दिस was partition of Bengal. Now, anti-partition movement. Okay, there was public awakening against partition not only in Bengal but all over India. 16 October, the day of partition, was observed as nation mourning day. Okay, all over India there were protest meetings to condemn the government decision. Vande Mataram came to be sung everywhere. But जो दिन था 16 अक्टूबर, जब भी बंगाल का पार्टीशन किया था, सबने मॉर्निंग सबने शांति बनाए रखी थी. ओके, there was no one to say anything, everyone was utter silence, and then there was we all were against the Britishers. So Vande Mataram was being sung everywhere. As a symbol of unity, Raksha Bandhan programs were held. तो रक्षा बंधन क्यों कर रहे थे? That unity, no matter of what religion or what caste a person is, हम लोग सब साथ में हैं, and that is why रक्षा बंधन सेलिब्रेट किया जा रहा था. Students in large number boycotted government school and colleges and participated in the movement. The leadership of this movement was in the hands of Surendranath Banerjee, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore, and such other leaders. The extent of Indian National Congress increased due to anti-partition movement. It became a national movement. Owing to the severity of dissatisfaction, the British annulled the partition of Bengal. Britishers ने सोच लिया हम हिंदू मुस्लिम को अलग कर लेंगे तो ये लोग वीक हो जाएंगे. But that was not the case. People knew that over here now हम लोग को रिलीजन और कास्ट नहीं देखना, हमको एक साथ आना है एंड हमको ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है. तो ब्रिटिशर्स का पचका हो गया. उनको लगा कि इफ़ वी मेक अ पार्टीशन, ये लोग वीक हो जाएंगे. बट हम इंडियंस उतने ही स्ट्रॉन्ग हो रहे थे. जो स्कूल्स थे, द स्टूडेंट वे बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट स्कूल, दे डिडंट वांटेड टू गो देयर, एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, ऑल ऑफ दीज लीडर्स वर द वन हु वर into this anti-partition movement.
and the government knew that people are over here together and we cannot fight amongst them, and last में उन्होंने क्या किया, the Britisher annulled the partition of Bengal. Annul मतलब क्या, कि उन्होंने बोल दिया कि जो partition of Bengal है वो लीगल नहीं है, लीगल या वैलिड नहीं है, आप लोग बोल सकते हो, तो annulled is not legal or valid. Okay, now let us come to the next one. 4 points program of Indian National Congress. Okay, Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress session of 1905. He supported the anti-partisan movement. Dadabhai Navroji was the president of 1906 session. तो 1905 के कौन थे president? गोपाल कृष्ण गोखले. 1906 के दादाभाई नवरोजी president थे. For first time he pronounced the word Swaraj from the stage. In this presidentialship he gave the message that remain united, try sincerely and fulfill the aim of Swaraj, so that today we will be able to save lakhs from the people suffering from poverty, hunger, disease, and India will be a respectable position among developed country. Okay, तो 1906 के जो थे प्रेसिडेंट दादाभाई नवरोजी, वो जब स्पीच दे रहे थे, so for the first time he said the word Swaraj. Now what do you mean by Swaraj, students? Swaraj is self rule. Swa म्हणजे स्वतःचं आणि राज is rule. Okay, so self rule is called as Swaraj. And he said कि हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा, हम जब एक साथ आएंगे तब भी we can save, at that point only we can save lakhs of people who are suffering from poverty, जो गरीबी हमारे देश सहन कर रही है, the people who are hungry from diseases, and all together we need to come together and fight against this Britishers. In the same session, Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott, this 4-point program was unanimously accepted by the Indian National Congress. तो वो 4-point program हम लोग ने title देखा, तो 4 point क्या था students? One was Swaraj, as I said earlier, self-rule. Second is Swadeshi. Swadeshi is movement for स्वदेशी मतलब क्या? स्वदेशी मतलब स्व इज़ खुद का एंड देशी मतलब खुद के देश का प्रोडक्ट यूज़ करना, टू यूज़ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन. जैसे हम लोग अभी वोकल फॉर लोकल देख रहे हैं, राइट, दैट वी आर सपोर्टिंग ब्रांड्स विच आर ऑफ आर कंट्री. इन द सेम वे वोकल फॉर लोकल इज, यू कैन से इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी. स्वदेशी मतलब क्या, कि हम लोग को फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, हमको उनके गुड्स यूज़ नहीं करने, हमको हमारे खुद के देश के गुड्स यूज़ करने हैं, इसको बोलते हैं स्वदेशी. नेशनल एजुकेशन के एवरी पूरा कंट्री में अपने को एजुकेशन मिलना चाहिए. एंड बॉयकॉट के हमको ब्रिटिशर्स को उनके रूल्स को बॉयकॉट करना है. दिस 4 points were the main program which was being accepted. Okay, unanimously everyone agreed to this point, which was being led by Indian National Congress. Due to Swadeshi movement we will be self sufficient, कि हम लोग खुद से we would be self sufficient, हम जितना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उतना ही यूज़ करेंगे. To follow the path of Swadeshi, we need to bring together capital, resource, manpower and such other forces, and from this the benefit of the country could be achieved. अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं स्वदेशी यूज़ करना, जो खुद का कंट्री का गुड्स है वो यूज़ करना, तो उसके लिए पहले हमारे पास कैपिटल, उतना पैसा होना चाहिए, फिर उतना रिसोर्स होना चाहिए, बराबर ना. पैसे आ गए तो रिसोर्सेस होना चाहिए, उतने लोग होने चाहिए, मैन पावर इज़ उतने लोग जो हमारे अंडर काम करेंगे. And if all of these together, if we have all of these things together, then only we can achieve this thing. It was decided that boycotting of foreign goods is the first step and boycotting of foreign rule will be the next step. As I said कि हमको foreign goods को use नहीं करना है, तो boycotting foreign goods ये हमारा first step होगा, and then boycotting the British rule would be our second step. Due to boycott, we will be able to attack the roots of British imperialism, was the opinion of some of the leaders. कि अगर हम लोग ने उनका goods ही यूज़ नहीं किया तो एक पॉइंट पे ब्रिटिशर्स वीक हो जाएंगे, ये किसी लीडर्स का ओपिनियन था. Now, differences between moderates and extremists. The differences between the ideologies of Indian National Congress rose to great extent in Surat session in 1907. The moderates were trying to keep aside the resolution of Swadeshi and boycott.
Okay, the extremists trying that this opposition should not be successful. Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee, Feroz Shah Mehta, such moderate leaders blame that extremist leaders are trying to capture the Indian National Congress. अब क्या हो गया था, जो ये बॉयकॉट, जो स्वदेशी एंड स्वराज का रूल था ना, सो जो मॉडरेट्स थे, जो एकदम पीसफुली करना चाहते थे, दे वर नॉट इनटू दिस थिंग ज़्यादा, एंड एक्सट्रीमिस्ट दे वर ट्राइंग दैट ये अपोजिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए. दे वर अपोजिंग इट. जो मॉडरेट थे वो उसको इतना अपोज कर रहे थे, तो एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि नहीं ये अपोजिशन को रोकना चाहिए. ओके, एंड ये सारे जो लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो एक्सट्रीम, मैंने बोला ना एक्सट्रीम लेवल वाले, उनको दे थॉट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनको कैप्चर करना है. लाला लाजपत राय ट्राइड टू एक्ट एज अ मीडिएटर. लाला लाजपत राय जो थे, ही एक्टेड बीच में, ना कि मॉडरेट ना कि एक्सट्रीमिस्ट, बीच में थे वो. एज पर तिलक ओपिनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ नेशनल प्लेटफॉर्म, हेंस इट कुड नॉट बी डिवाइडेड. ड्यूरिंग दिस सेशन द टेंशन इंक्रीज, एंड सिंस नो कॉम्प्रोमाइज वॉज पॉसिबल, फाइनली देयर वॉज अ स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब क्या हो गया था, मॉडरेट्स अपोज में थे, एक्सट्रीमिस्ट इतने अपोज में नहीं थे, तो देयर वाज डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन, एंड सिंस इट वाज अ नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते थे, एंड दस ये उसमें देयर वाज अ स्प्लिट, के थोड़ा स्प्लिट हो गया, वापस अपोज करने वाले एंड नहीं अपोज करने वाले वैसे. नाउ द सुप्रीशन ऑफ ब्रिटिश, सप्रेस मतलब क्या, दबा के रखना. तो ब्रिटिशर्स को हमेशा यही था कि हम इंडियंस हम दब के रहे इनके रूल में. After Anti-Partisan Movement, the government was disturbed looking at the influential public protest. To control this movement, the government used the policy of suppression. Holding of public meetings were legally banned. अब ब्रिटिशर्स को पता था ये लोग एक साथ आने लगे एंड हमारे खिलाफ दे आर प्लानिंग समथिंग, तो नाउ दे डिसाइडेड टू स्टॉप दिस. तो उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक मीटिंग्स थी ना, जो पब्लिक मीटिंग्स फॉर्म करते थे, उसको बैन कर दिया था कि वो नहीं होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ. स्कूल चिल्ड्रन वर ऑल्सो बीटन अप. मैनी रेस्ट्रिक्शन वॉज इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर. मैनी प्रिंटिंग प्रेस वर कॉन्फिस्केटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ब्लेम ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. अब क्या हो रहा था, जो स्कूल चिल्ड्रंस जिन्होंने कम्प्लीटली ये कर दिया था, बंद कर दिया था जाना, तो उनको द ब्रिटिशर्स वे beating them, the government was beating them. And then there were many restrictions on newspaper, the newspaper in which criticism of Britishers जो था, जिसमें किया था, वो सारे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया. फिर जो ये लोग थे, प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कुछ लिखते थे, तो उनको बंद कर दिया. कॉन्फिस्केटेड इज़ कम्प्लीटली बंद कर देना. वैसे राइटर्स एंड एडिटर्स वे इम्प्रिजन, के जो राइटर्स एंड एडिटर्स थे, द वन हु यूज्ड टू राइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वर इम्प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया था. स्ट्रिक्ट एक्शंस वे टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. दिस लीड टू अ सीवियर रिएक्शन इन बंगाल. द रिवॉल्यूशनरी adapted the means of firing, bomb blasts, etc. These bombs attack were advocated through Kesari newspaper by Lokmanya Tilak. The charge of sedition was put on Lokmanya Tilak, for which he was sent to Mandalay jail at Myanmar for 6 years imprisonment. अभी क्या हो गया था, what happened student was, all of these actions were done against all Indians, right? So Lokmanya Tilak, what he did, he used to मेक केसरी के थ्रू वो अभी भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. तो द चार्ज ऑफ सेडिशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिशन स्टूडेंट? सेडिशन इज़ कोई वर्ड्स या कोई एक्शन ऐसा हो विच इज़ इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि जो लोगों को एनकरेज करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने को, उसको सेडिशन बोलते हैं. तो वो चार्ज के अंदर लोकमान्य तिलक जी को जेल में डाल दिया था, एंड ही वॉज देयर इन जेल for 6 years in Mandalay jail. And then Bipin Chandra Pal was also sentenced to jail. He also supported, so he was also sentenced to jail. And Lala Lajpat Rai जो mediocre थे, उनको तो he was deported from Punjab, उनको पंजाब से हटा दिया गया था. Now establishment of Muslim League.
The British became very disturbed, that now British were completely disturbed seeing the response, okay, that everyone was coming together and stuff. So British once again followed the policy of divide and rule. They started using the propaganda that for safeguarding the interest of Muslim they should have a separate political organization. ओके, तो उन्होंने क्या बोला, मुस्लिम लोग को और भड़काया. उन्होंने क्या बोला कि आप लोग के सेफ्टी के लिए आप लोग का खुद का पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए वैसा. Due to the motivation of British government, a committee of upper class Muslims under the leadership of Aga Khan met Governor General Lord Minto. Due to motivation from Lord Minto and other British officers, the Muslim League was established in 1906. तो जो मुस्लिम्स थे उनको भी ये चीज़ पता कि या हमारे सेफ्टी के लिए होना चाहिए. एंड देन देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906. मॉर्ले मिंटो एक्ट, ओके, एंड इनके ये जो लॉर्ड मिंटो जो थे, ही वॉज the one who established that Muslim League. Now, Morley Minto Act, there was a dissatisfaction among the Indians regarding the work of British government. The Indian felt that the reason of poverty in India was the economic policy of Britishers. Right? हम लोग क्यों, हमारा इकोनॉमी क्यों हिल गया था? बिकॉज जो पॉलिसीज़ थे जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे या इस्तेमाल किए थे, which they were using was actually the reason of poverty for Indians. Oppressive policy of Lord Curzon, exclusion of educated Indians in government services, unjust behavior towards Indian in Africa, all this added to the dissatisfaction of Indian people. कि जो exclusion of educated Indians, जो अच्छे पढ़े लिखे Indians थे, उनको भी government services नहीं मिलती थी, and all of these things made Indian people unhappy. Britishers के लिए Indian people were not that happy for us, क्योंकि हम लोग को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं जाता था. As a temporary remedy on the discontent among Indians, the Morley Minto Reform Act of 1909 was passed. According to this act, it increased the number of Indian members in Legislative Assembly and provisions of inclusion of some elected Indian representative in Legislative Assembly was made. In the same act, separate electorates were provided to Indian Muslims. Due to this conspiracy of British, the seeds of division in India were sown. अभी क्या हो गया था, तो ये एक्ट हम लोग ने इंडियंस ने पास किया था. इसमें बेसिकली क्या लिखा गया था, दैट इंडियंस majority of Indians should be a part of legislator जो मैंने पहले बोला, the group of people who vote for new laws. तो उसके लिए majority Indians भी part होने चाहिए, so that we also get to know ना what is happening, what laws are being made for our country. So उस टाइम पे what Britishers did, देखो fourth last line देखो, in the same act separate electorates were provided to Indian Muslims. Now what is electorate, students? Electorates is people who are eligible to vote, उसको electorates बोलते हैं, कि the one who can vote is called electorates. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम्स थे उनको इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए. अब ये केस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस द सीड्स ऑफ डिवीजन वाज सोन. ब्रिटिश मतलब क्या हो गया, बेसिकली अभी इंडियंस को ऐसे लगाना कि मुस्लिम्स को इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए और हमारे लॉ पे तो काम भी नहीं किया जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई डिवीजन और क्रिएट हुआ हिंदू और मुस्लिम में. लखनऊ पैक्ट. इन द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1960 under the leadership of Lokmanya Tilak, an attempt was made to resolve the dispute in Indian National Congress. In the same year, there was an agreement between Indian National Congress and Muslim League known as the Lucknow Pact. तो अभी हम लोग ने इंडियंस ने वो इसके थ्रू जो हम लोग ने अभी ये किया मिंटो एक्ट के थ्रू, हम लोग ने बोला कि इंडियंस ज़्यादातर होने चाहिए लेजिस्लेटिव पार्ट में, एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुस्लिम्स को इलेक्टोरेट्स दे दिए. सो नाउ लखनऊ पैक्ट वॉज बीन फॉर्म्ड. ये एक एक्ट था लखनऊ पैक्ट करके, विच वॉज बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. ओके, तो इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस agreed to separate electorates to Muslim, and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work for getting political rights to India. तो अभी क्या हो गया था,
नेशनल कांग्रेस ने क्या बोल दिया, दैट वी अग्री कि जो इलेक्टोरेट्स है ना वो मुस्लिम एंड मुस्लिम लीग को मिल जाएंगे, एंड मुस्लिम लीग भी अग्री हो गई कि ओके यू गाइज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, तो आप भी वो पार्ट में यू कैन टेक दैट पार्ट, ओके। तो वैसा हो गया था। दिस वॉज द लखनऊ पैक्ट के basically it was between Indian National Congress and Muslim League, and Muslim League, Indian National Congress was ready कि electorates जो Muslim and Muslim Leagues को मिलना चाहिए, and Muslim Leagues were ready कि Indian should be a part of political rights. Home Rule Movement. In 1914, when Lokmanya Tilak was released from Mandalay jail, the First World War had begun in Europe. The direct consequences of this war had to be borne by India as well. Okay, so 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था यूरोप में, बट इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो इंडिया को भी झेलने पड़ रहे थे. द रेट्स ऑफ बेसिक नेसेसरी कॉमोडिटीज़ इंक्रीज्ड. ओके, कि जो बेसिक कॉमोडिटी होती है ना, द बेसिक एलिमेंट विच वी यूज़, उनका रेट बढ़ गया था. मैनी रेस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन the Indians by the British government. This led to increased dissatisfaction in the minds of Indians. That Indians were dissatisfied कि भाई आपके यूरोप में वॉर चल रहा है तो आप उसका परिणाम आप उसका इफेक्ट हम लोग पे क्यों डाल रहे हो. एंड everyone was angry, everyone was sad. Dr. Annie Besant and Lokmanya Tilak started Home Rule movement. Home Rule means self-government. Such movement also began in Ireland against colonialism. Okay, so Home Rule किन्होंने स्टार्ट किया, डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक. होम रूल इज़ बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमारा खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड हम उस पर we should make the government and we only make the rules for the government. On similar lines, Home Rule movement demanded rights of self-government in India. Annie Besant and Lokmanya Tilak made an extensive tour in different parts of the country, and the demand for self-government reached the common people. Tilak firmly stated that Swaraj is my birthright and I shall have it. तो होम रूल मूवमेंट मतलब क्या, सेल्फ गवर्नमेंट, और स्वराज का मतलब क्या हो गया, सेल्फ रूल, मतलब मीनिंग सेम ही है. तो होम रूल मूवमेंट ने क्या किया, डॉक्टर एनी बेसेंट एंड तिलक, उन्होंने दे वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब अपने इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में वो लोग घूमे, एंड पीपल को सेल्फ गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस बताया कि अगर खुद का गवर्नमेंट होगा तो हम लोग एक दूसरे का हेल्प कर पाएंगे एंड एवरीथिंग. फिर सबको कन्विंस किया, एंड देन पीपल वर टुगेदर फॉर दिस होम रूल मूवमेंट. एंड देन एट दैट टाइम तिलक फॉर्मली सेड, तिलक जी ने क्या बोला, दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, मेरा खुद का बर्थ राइट है, एंड आई शैल हैव इट, और हम लोग ये लेकर ही रहेंगे. Now, First World War in India. The war atmosphere in Europe, growing dissatisfaction in the minds of Indian, popularity of Home Rule movement. In such conditions, it was necessary for British to get cooperation from India. बराबर ना. अभी देखो इंडियंस, एक तो ये लोग ब्रिटिशर्स हम पे हर चीज़ में they were increasing the price of every commodity, and everyone was very angry with Britishers, and plus this Home Rule movement was at a very good speed. हमारा अच्छा खासा स्पीड पे था होम रूल मूवमेंट. सो ब्रिटिशर्स न्यू कि हम लोग को इनको इंडियंस को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दे कैन क्या बोलते कि हमारी ये लोग वाट लगा देंगे वैसा. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स टू इंडियन. सो दे डिसाइडेड कि ठीक है भाई, इनको राइट्स चाहिए ना, हम लोग दे देते तो सो दैट ये लोग थोड़ी देर के लिए शांत तो हो जाएंगे वैसा. In 1970, Montague, Secretary of State for India, declared that step by step Indians will be given right to self-government and responsible political system. Tilak also declared that if government is going to show sympathy and considerable attitude towards the demands of Indians, only then Indian public is ready to cooperate to the British. This policy of Lokmanya Tilak is known as responsive cooperation. Okay, so what he said, first Tilak came with the policy of home, क्या था वो,
home rule movement, right? That self government should be established, self government should be there. And now this was the next policy, which was responsive cooperation. Matlab kya? The Britishers agreed that okay, Indians would be provided by all the rights, all the rules step by step. And Tilak said okay, fine, if they provide us properly and all the demands of Indians are fulfilled, then only we would cooperate with you. फिर ही हम लोग आपके साथ cooperate करेंगे. यार ये जो बात हुआ इसको बोलते हैं responsive cooperation. Montague-Chelmsford Reform Act. In 1990, the British Parliament passed another act to bring constitutional reforms in India. तो reforms change लाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश और पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, which was Montague-Chelmsford Act. According to this act, less important departments were transferred to Indian ministers, whereas the important departments like finance, home affairs and revenue were under the control of government. अभी ब्रिटिशर्स ने पहले क्या बोला था कि ओके हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, वी वुड प्रोवाइड यू ऑल द पॉलिसीज़, बट इन्होंने वापस चीटिंग किया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो एकदम मेन टॉपिक्स थे जैसे फाइनेंस हो गया कि हमारे कंट्री का फाइनेंस क्या है, होम अफेयर्स, रेवेन्यू, ये सारे जो मेन टॉपिक्स थे वो तो अब भी ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थे. द 1990 एक्ट डिड नॉट गिव मच एक्सपोजर टू द डिमांड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हमारी जो डिमांड्स थी वो तो फुलफिल हुई नहीं थी. एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस एक्ट. Tilak criticized this act in the following words: "This is neither Swaraj nor it is foundation." तो तिलक को भी गुस्सा आया कि हमारे कोई राइट्स तो दिए ही नहीं गए. एंड उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ये जो एक्ट था. कौन सा एक्ट था? चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. उनको क्रिटिसाइज़ किया एंड क्या बोला, दैट दिस इज़ नॉट स्वराज, दिस इज़ नीदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन. द इंडियंस अंडरस्टूड दैट इफ़ दे हैव टू सबड्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैन द एजिटेशन नीड्स टू बी मोर रिगरस. के नाउ इंडियंस न्यू कि अगर हमको ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हम लोग को मोर रिगरस, हम लोग को और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. इंडिया गॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू मूवमेंट, दैट नाउ इंडियंस वर रेडी फॉर अ new movement. Understood, students? I hope you have understood the chapter. So the exercise part is something you will do it by yourself. This would be your homework. The complete exercise till sub question 4 you have to do it in homework. So yeah guys, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.